this is the question which says, it's a 7 to 8 mark question. Describe the process of photoactivation. And students, when they see such questions, they get totally puzzled कि अब लिखना क्या है इसमें, right? So you can see the diagram over here at the top that shows you that light is falling up. What are they showing you? This box with that which they have shown you is, this entire box is a thylakoid membrane. वही वाला जो उसपे बना हुआ था ना आपकी textbook में. So this has been taken from textbook stopper. It's a thylakoid membrane, which is of course made up of this photosystem. ठीक है? Photosystem is a combination of the primary pigment reaction center and the light harvesting complex, है ना? अगर मैं इसको कहूँ कि this entire thing, wait a minute, this entire thing is the photosystem. So what is it made up of? It is made up of this light harvesting complex, जो कि is made up of the accessory pigments and the primary pigment reaction center, which is entirely made up of chlorophyll A. ठीक है? Secondary pigments में जो है वो chlorophyll B भी है, carotenoids भी हैं. And you can see that the light is coming, it is moving, it is being absorbed by one pigment, then it moves on to another, and then it moves on to another, and finally all the rays of light, they will converge and they will finally get absorbed by the primary pigment reaction center. ठीक है? And let's see now what is actually happening her level pe, right? This is how we go about logically. We say, first of all, when any photosynthetic pigment absorbs light, it is said to be excited. ठीक है? वो एक excited state में चला जाता है. क्या? The photosynthetic pigment. Light energy boosts the electrons to a higher energy level. कहाँ से आ गए ये electrons? Remember that where are we? We are on the thylakoid membrane. बिल्कुल क्रिस्टी की तरह हैं. जैसे क्रिस्टी में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे. दिस ये जो आपका thylakoid membranes है ना, यहाँ पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? So the light energy boosts the electrons to a higher energy level. Yeah, the energy that is released, the energy that is released by these electrons is passed on to another photosynthetic pigment. ऐसे होता जाएगा, right? Yeah. The light harvesting complex, किसको कहते हैं? LHC, वो complex जिसमें ये सारी चीजें हैं, accessory pigments like chlorophyll B and carotenoids. It contains all these pigments. So all of these accessory pigments will collect the light of different wavelengths, है ना? Different wavelength है ना? Chlorophyll B अलग किस्म की wavelength absorb कर रहा है, carotenoid अलग किस्म की wavelength absorb कर रहा है. So all these lights of different wavelengths will be collected, making the process of light absorption or the absorbance ratio or the absorbance rate even more efficient, more rapid. ठीक है? All the energy after being passed from molecule to molecule will finally reach where? The reaction center, जिसको हम क्या कहते हैं? RC reaction center भी कह सकते हैं, primary pigment reaction center भी कह सकते हैं, which is entirely what? Which is chlorophyll A. अगर ये जो है वो photosystem 1 का chlorophyll A है, so it is going to absorb the light of a wavelength of 700 nanometers. अगर ये photosystem 2 है, तो ये कौन सा वाला प्राइमरी पिगमेंट रिएक्शन सेंटर होगा जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर्स की. ठीक है? हाँ. एंड फाइनली जो आपका प्राइमरी पिगमेंट रिएक्शन सेंटर है ना, इट रिलीजेस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स. It releases the high energy electrons, which will be finally accepted by an electron acceptor. वो क्या है उसका नाम पहले हम स्टूडेंट्स को कराते थे. It was in the syllabus and now I don't think we are supposed to, and you guys are supposed to remember the names of those electron acceptors. बस इतना काफी है कि after the light has been absorbed by all the accessory pigments and has finally converged to reach the primary pigment reaction center, the primary pigment reaction center is going to release high energy electrons, and finally those electrons are accepted by the electron acceptor. This is the process of photoactivation. ठीक है? Okay. थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से भी देख लेते हैं. What does the textbook say about photoactivation? अच्छा ठीक है, सही है. टेक्स्ट बुक इतना डिटेल से नहीं बता रही, बट यू आर सपोज्ड टू नो इट.
See, this gives you an idea about chloroplast. ठीक है, thylakoids, stacks of thylakoids known as grana. We zoom into one thylakoid, so we see what? ये एक thylakoid membrane है, and just like any other membrane, it's a phospholipid bilayer. Do you see it? ठीक है, it's a phospholipid bilayer, and then इसके पास क्या है? क्लस्टर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं embedded in the membrane. जब लाइट आएगी तो we will be having the accessory pigments. जैसे जैसे अंदर 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 लाइट जाएगी तो the light is going to reach the primary pigment reaction center. अच्छा, ये आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर इसमें दिखा रहे हैं. The structure of the chlorophyll, you're not supposed to remember it, बस इतना पता होना चाहिए कि one chlorophyll molecule has a head and has a tail. ठीक है, जो इसका हेड है ना, it absorbs the light, और जो टेल है इसकी हाइड्रोकार्बन टेल है, और जो हेड का बहुत एसेंशियल पार्ट जो है ना वो मैग्नीशियम एटम है. दैट इज व्हाई, और नाइट्रोजन भी है, बेसिकली मैग्नीशियम भी है और नाइट्रोजन भी है. आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट, बट ओ लेवल्स में हम बच्चों को कराते थे कि इफ अ प्लांट इज ग्रोइंग इन अ सॉइल व्हिच इज डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, सो व्हाट हैपेंस इज कि उस प्लांट के लीव्स जो होते हैं वो पेल एंड येलो होते हैं, बिकॉज a plant needs magnesium and nitrogen to synthesize chlorophyll. So essentially this structure which is visible to you over here is the structure of a chlorophyll molecule. तो अगर किसी प्लांट के पास सॉइल में जो मिनरल सॉल्ट्स हैं उसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन नहीं है तो इट कांट मेक क्लोरोफिल, बिकॉज व्हाई? इसका जो ये पार्ट है इट हैज द मैग्नीशियम एटम आल्सो एंड द नाइट्रोजन एटम्स आल्सो. ठीक है. अच्छा, एक और चीज भी आपको नजर आ रही है कि देखो ये आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि इफ दिस क्लोरोफिल इस क्लोरोफिल ए, तो इसके पास CH3 होगा, मिथाइल ग्रुप होगा. ठीक है, इन द हेड. whereas if it's chlorophyll B, तो ये CHO होगा. So you can see that these minor differences will actually result in the chlorophyll being entirely different, of a different variety. chlorophyll A होगा तो वो different उसकी wavelength की light absorb करेगा, और chlorophyll B जो होगा वो different उसकी करेगा, and all is related to their structure. ठीक है. I hope this thing is not very boring for you, Abdullah. No, miss, it's making sense. It's making sense. It's making sense because students बहुत ज़्यादा, you know, they actually get bothered जब हमको ये पढ़ाते हैं. Look at this. ठीक है, this is showing you visible light and it's 7 colors. तो अगर visible light को हम ऐसे करते हैं ना, तो बच्चों को वो rainbow colors पढ़ाते तो we say violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, है ना, ऐसे कराते हैं ना विब्यो. ठीक है, तो वायलेट इस वाले एंड पे है, रेड इज ऑन दैट एंड. सो वायलेट एक्चुअली बिगिंस विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड रेड इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. अच्छा, आप मुझे बताओ फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ फिजिक्स, द शॉर्टर द वेवलेंथ द ग्रेटर द एनर्जी, या फिर द लॉन्गर द वेवलेंथ द ग्रेटर द एनर्जी? शॉर्टर. शॉर्टर. ठीक, ये बात दिमाग में रखना क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट भी आने वाला है. Okay. हाँ, मैं CS physics से इससे लिंक है, electron excitation and everything. मैंने like physics में like photoelectric effect पढ़ा हुआ है, तो like उससे linked है, so it makes sense. Okay, so this is the same graph. अच्छा, ये सबसे फेवरेट ग्राफ है, वैसे एग्जाम में बहुत आता है. It is known as, जब भी अभी हमने टेक्स्ट बुक से देखा था ना, तो the name of this graph is the absorption spectrum. इसको कहते हैं absorption spectrum. Okay. What is it? It is जो है, they're also like another absorption pigment. Of course, They're क्योंकि just a type, like chlorophyll A है, हाँ, chlorophyll B, and carotenoid का type है. बिल्कुल बिल्कुल. और दूसरी बात ये कि ऐसे कलर के भी तो लीव्स होते हैं ना, ये जो कैरोटीनॉइड का कलर देखो येलोइश ग्रीन है. Yeah. अच्छा, तो अच्छा, अब क्या आपसे एग्जामिनर चाहेगा? ही विल गिव यू दिस ग्राफ, ही विल आइदर आस्क यू टू डिस्क्राइब इट और एक्सप्लेन इट. ठीक है, तो ऊपर जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कि डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इन रेड एंड ब्लू लाइट, वो भी हमने किया डिस्कशन पीछे. ठीक है, तो इट्स अ रेपिटेशन, ये हम सब कर चुके हैं कि उसका पीक उधर है, उसका पीक उधर है. ठीक है, and yes, now comes another spectrum. At the top you can see the graph जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था. ठीक है, ये वाला, ये जिसको हम कहते हैं absorption spectrum. But below there is a graph. Can you tell me the difference between the graph at the top and the graph below? अभी साथ डिस्कस कर लेते हैं. Tell me the difference. Basically,
एक सेकंड, ये अब्जॉर्बेंस है एंड लेफ्ट पे इस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है. So this is basically talking about activation जो आप कर रही थी बस, like जब प्राइमरी पिगमेंट के बाद, हाँ कि क्या हाँ what is it, एक्टिवेट photo activation you said? photo हाँ photo activation. Basically, you know what, these two graphs are more or less the same. The only difference is that the graph at the top is actually showing you the absorbance rate of each of these pigments at different wavelengths, whereas the graph below is showing you के rate of photosynthesis किस wavelength पे कितनी हुई. देखो absorbance अलग है, rate of photosynthesis अलग है. Absorbance उसे ये बता रही है ना कि ये वाला जो pigment है ना वो कितनी absorption करता है किस wavelength पे, वो एक अलग किस चीज वे है. में? हाँ सही है. ठीक है. और फिर एब्जॉर्प्शन करने के बाद व्हाट इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच मींस पूरा जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है. तो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू. बट व्हाई डू यू थिंक आई एम शेयरिंग दिस ग्राफ व्हिच इज बिलो द अपर ग्राफ, जो नीचे वाला ग्राफ है उसका क्या कनेक्शन है विद द ग्राफ एट द टॉप? Or let me put the question like this. एक second, actually, let me rephrase the question. Do you think that the rate of photosynthesis is directly proportional to the absorbance rate of the pigments? Generally हम ये comment कर सकते हैं general कि the more the absorbance the more the rate of photosynthesis. Generally कह सकते हैं ना, ये एक comment दे सकते हैं. वेट बट अब जितना ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो रहा है उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है. है. या But I can say that for not all the pigments, isn't it? एंड इट्स मिस, ये व्हाइट लाइन है, ये आपने बनाई हुई है या ये इन लोग ने बनाई हुई? Sorry, this white line is a mistake actually. It's a misprint. अच्छा, Just ओके ओके ignore the white lines. ओके 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 हाँ ओके, हाँ मैं वही थोड़ा कंफ्यूज था. ओके सो हाँ, सो मिस लाइक फॉर एग्जांपल एट वेवलेंथ्स ऑफ लाइक 550 500 से हाँ 600 ज्यादा हम्म. फोटोसिंथेसिस है कम अब्जॉर्बेंस पे. सो उसकी रिलेशनशिप डिफरेंट है हाँ कंपेयर टू लाइक 500 से कम हम्म एंड लाइक 600 से ज्यादा. हम्म. Okay, let me ask you another question. अभी आहिस्ता आहिस्ता What am I समझ missing? आएगा. Like I'm missing a point. Like what is it? हाँ, the point that you're missing is that this graph which is below, it actually shows you its shape is very similar to the graph of which pigment at the top, A, B और carotenoids. चलो ऐसे बता दो. Acha, so miss, this looks like B, yeah, carotenoids, right? To be honest, A से B. it looks like A, sorry, it looks like A. इट लुक्स लाइक ए. ठीक है. तो इससे ये पता चल रहा है कि एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज थ्री पिगमेंट्स इज क्लोरोफिल ए. सबसे ज्यादा वो रोल प्ले कर रहा है किसमें? फोटोसिंथेसिस में. इसका बड़ा पिवटल रोल है, राइट? यस, ऑफ कोर्स carotenoids also have a role, which is why you can see that between the wavelengths of 450 till around 600, ऑल्दो हमारे पास क्लोरोफिल ए की एब्जॉर्बेंस इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जीरो नहीं जा रहा. इज दैट ट्रू? Yeah, नहीं जा है रहा. ना? तो That means हाँ, तो इसका हर मतलब क्या है? wavelength पे इसका मतलब थोड़ी सी photosynthesis हो रही है. एग्जैक्टली. देखो इससे बहुत सारे पॉइंट्स निकल रही हैं. सबसे पहले एक पॉइंट ये निकल रहा है कि क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. क्लोरोफिल ए सबसे फास्टेस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देता है. ठीक है, एक तो ये पॉइंट निकल रहा है. सेकंड ये पॉइंट निकल रहा है कि there are some wavelengths at which the chlorophyll A does not absorb any light, जैसे कि 500 से लेकर या 450 onwards से लेकर और 550 तक. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम रेट को देखते हैं ना तो रेट जीरो पे नहीं टच कर रहा, which means that besides chlorophyll A there are other pigments, especially carotenoids and chlorophyll B, which are playing a role or which are contributing to the rate of photosynthesis. ठीक है, so to sum up we can say that chlorophyll A is not the only photosynthetic pigment. हम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं ना? ओके. yes. um
हाँ ये पार्ट बी पढ़ो. Different pigments have different absorption spectra, say maximum of action spectrum does not closely match with, say, of any single pigment. Although peaks at the two ends of the absorption spectrum are of similar height, the action spectrum has a larger peak at 650. The action spectrum does not perfectly match. Not all absorbed light is used. अच्छा, तो ये बोलना चाह रहा है कि not all of the absorbed light is used in photosynthesis, but why? The reason why, because a lot of light is wasted. But जब आती है ना, मतलब when it comes from the sun, तो a lot of it is reflected. सब बहुत ही कम absorb करते हैं आपके leaves जो है ना. A lot of it is wasted. That's why also. ठीक है? okay. तो हाँ, so this means that I cannot say that the action spectrum is an exact match of the absorption spectrum for any particular pigment, number one. Number two, I can say that the main photosynthetic pigment is chlorophyll A. Number three, I can say that besides chlorophyll A, there are other pigments also that play a role, because there is no point on the graph on the action spectrum where the photosynthesis reaches zero or touches zero. And last of all light energy is not absorbed. वरना अगर सारी light energy absorb होते तो हमें बिल्कुल एक peak मिलता और वो maintain रहता. So this means that a lot of light energy is also wasted. ठीक है? तो ये है इसका. I think we are done for today, and I'm definitely going to share my slides with you today. और हो सकता है कि एक दो और भी मैं slides कुछ नई बना के ना, I'll share it with you. तो मैं So that जल्दी it से becomes, हाँ check कर लेगा, so I हाँ can go through them. ठीक है, I'll do that inshallah, don't you worry.